Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here the question is that how to convert the what here structural formula into the electronic formula and zigzag formula or bond line formula. ठीक है. First of all we take the what how to convert the what here the structural formula into the what here electronic formula, or what is the electronic formula of any member of alkane or any member of organic compound. And second, what is the zigzag formula or bond line formula of the any organic compound. ठीक है बेटा. So first of all we take here the point here electronic formula. What here? So we take the here the electronic formula and zigzag line formula. The zigzag line formula is also called as what here bond line formula, or it is also called as what here the bond line formula. First of all we take the how to write the electronic formula. What is electronic formula? The electronic formula, it means the how to write the structure of any organic compound with the help of electronic formula. Clear बेटा. तो इसमें आप याद रखेंगे बेटा electronic formula means it is also called as a valence electronic formula. ठीक है. According to Lewis says that the electronic formula are right with the help of the number of electron which is present in the outermost shell, or depend upon the valency, depend upon the what here valency, and these bond are represented by the electron called as the electronic formula. ठीक है बेटा. क्लियर है. the how many electron or the last electron in the outermost shell, on the basis of the last electron or outermost electron or valence electron, we write the electronic formula of any organic compound. So we take the how to write the electronic formula of member of alkane. Clear. So we take what here. First of all we take the member of alkane, with molecular formula. Second, electronic formula or electronic structure, both are same. And third, we take the what here zigzag line formula. What here zigzag line formula, or zigzag line formula is also called what here bond line formula. The question याद रखो बेटा. what is the electronic formula? It is a formula which indicate that it is defined as the how many electron in the outermost shell or valence shell. This valence shell or valence electron are right in the form of electron called as the electronic formula. Clear. Second, what is the zigzag line formula or bond line formula? So in this formula the carbon and hydrogen are right in the form of bond. The formula in which the carbon and hydrogen are right in the form of the bond called as the bond line formula. Clear beta. The bond line formula is defined as the carbon and hydrogen are represented by the bond line. It means the carbon represented what here the bond, and hydrogen also represented by the what here bond called as the bond line formula. ठीक है बेटा. Now we take the member of alkane first. What we take the member of alkane first here? So first we take the here methane. Clear. What is the molecular formula of methane? So CH4 is the molecular formula of methane. Now how to write the electronic structure, electronic formula of methane? So first of all we take it means the structural formula and electronic formula both are same. In the structural formula we take the bond in between the two carbon, where in the electronic formula this bond represented by the electron. Clear है बेटे. देखो यहाँ पर for example
What is the structure formula of the methane? So it is CH4. Why here? CH4 is a what is structural formula of the methane, and these bond are represented by the electron. You know this bond. It means one bond are prepared by how many electron? So this one bond are prepared by 2 electron. So these bond are represented by in the form of electron. What? In the form of electron called electronic formula. ठीक है बेटा? तो ये जो बॉन्ड है बेटा, इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में. ये जो बॉन्ड है ना, आपको पता है एक बॉन्ड कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है. ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन and 1 electron from this hydrogen. So 1 carbon are represented by dot line and this electron are represented by the cross line. So it is called as the electron of what here? The carbon, and the is a electron of hydrogen. It is called as electronic formula of the what here methane molecule. ठीक है बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम लोग जो लिखते हैं तो बॉन्ड लिखते हैं बेटा, और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले में वो जो बॉन्ड बना है कैसे बने बॉन्ड, जो वन बॉन्ड फॉर्म है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते तो होता है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला. इट मीन्स द बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला. इन ए सिंपल लैंग्वेज, द bond in between the 2 atom, the bond in between the 2 atom are represented by the electron called as the electronic formula. This dot indicate the electron of carbon, whereas this cross line indicate the electron of hydrogen. Clear beta? Now this formula is how to convert this electronic formula into zigzag line formula. It means zigzag means what here? The zigzag line indicate there what number of carbon here. So the zigzag formula of a methane is does not. यानी कहने का मतलब हम लोग 2 कार्बन रहे तभी इसका zigzag formula लिखेंगे, अगर एक कार्बन है तो zigzag formula से लिखते नहीं. ठीक है बेटा, तो here methane molecule does not show the zigzag line formula or bond line formula. ठीक है बेटा. Now second we take here what? Number 2 we take the what here? Ethane molecule. What is the molecular formula of ethane? C2H6 is a molecular formula of ethane. Now we write the first structural formula, and this structural formula how to convert into the electronic formula. So how many carbon? 1, 2, and each have the what here? 3 hydrogen. It is called a structural formula of what here? Ethane molecule. Now this structural formula how to convert the electronic formula? This bond are represented by the electron. जैसे लाइट ऑफ वाटर है मीथेन, जैसे मीथेन लिखा है बेटा हमने, तो यहाँ पर क्या है बेटा बोलो? These are right in the form of what here बेटा? It is called as the electron of carbon. Here carbon, here dot electron of what here? Carbon, and this cross line is a electron of what here? Is a electron of hydrogen. Okay, so it is called as the electronic formula of what here? The ethane molecule. क्लियर बेटा? दोनों में क्या बेटा चेंज है? इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले में और स्ट्रक्चर फार्मूले में चेंज किया. स्ट्रक्चर फार्मूले को हम लोग बॉन्ड की फॉर्म में लिखते हैं, और वो जो बॉन्ड कैसे बना इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला. ठीक है. नाउ दिस इथेन मॉलिक्यूल हाउ टू कन्वर्ट इनटू द zigzag formula. So how many carbon? 2 carbon. This 2 carbon called as what here? This like that of this. It means this indicate carbon, this indicate carbon. It means this also write in the form of how many carbon? 2 carbon, carbon, carbon. How many hydrogen? 3 hydrogen. Each have the 3 hydrogen, so it is called 3 hydrogen like that of this. Here also what here? Carbon. How many H? 3 H. It is called as a zigzag formula or bond line formula of the what here? Ethane molecule. याद रखो बेटा, ये ऐसा लिखना है. ये अगर ऐसा, इसका मतलब क्या है बेटा? ये फर्स्ट वाला कार्बन है, सेकंड वाला कार्बन है. क्लियर है? और ईच कार्बन है तो हाउ मेनी हाइड्रोजन? फर्स्ट और 3 एंड सेकंड आल्सो द 3 लाइक दैट ऑफ दिस. ये क्लोज फॉर्म है, ओपन फॉर्म है. It is called as what here? So it is called as zigzag line formula of the bond line formula. It means the carbon and atom are represented in the form of the bond called as the bond line formula. ठीक है? क्लियर है बेटा? Okay. Next here, what we take next here? Ethane molecule. Then third we take the propane molecule. How many? What is the molecular formula of propane? C3H8. How many carbon? 3 carbon. 1, 2, 3. How many H? 3 H. It means it is the structural formula of what here? The propane molecule. Clear beta? Now this
structural formula are changed into what formula? Electronic formula. It means this bond are represented by the what here? This bond are represented by the electron. Dot is the electron of carbon and cross line is the electron of hydrogen. So here the how many dot? 4 dot, because the 4 electron in the carbon. Remaining here the how many hydrogen? 3 hydrogen here. Okay beta? Here what here? Okay, so it is called as the electron of carbon 4 and each of the hydrogen is 1. Okay, so it is called electronic formula of the what here? Propane molecule. Now this electronic formula, how to convert into the what? Zigzag line formula or bond line formula? So how many carbon? 3 carbon. So this is like in the form of this: first, second and third. First carbon, second carbon and third carbon. Here first carbon, second carbon. It is also right in the form of this here. How many carbon? 3 carbon. 1, 2, here 3. First have the 3 hydrogen and last have 3 hydrogen. Clear beta? And remaining have the how many hydrogen? 2 hydrogen. It is called as the zigzag line formula of the propane. How many carbon? 3 carbon, called the propane molecule. Clear beta? Next here. Okay beta? Next we take the what here? Fourth example, butane. What is the molecular formula of butane? C4H10. It's a molecular formula of butane. Now it converts into structure formula. How many carbon? 1, 2, 3, 4. First have 3 hydrogen and last have 3 hydrogen. Clear beta? And middle have the each carbon have the how many hydrogen? 2 hydrogen. क्लियर बेटा? याद रखना है आपको, स्ट्रक्चर फॉर्म में जब निकालते ना आप तो पहले कार्बन को 3 H ऐड करना है और लास्ट वाले को 3 H ऐड करना है, रिमेनिंग जो मिडल में उसको 2 H ऐड लगाना है. ठीक है? ओके, इट्स विच फार्मूला? स्ट्रक्चर फार्मूला. नाउ it is structure formula. How to convert electronic formula? The bond are fall right in the form electron, because one bond form how many electron? 2 electron, one from the carbon and second of the hydrogen. ठीक है ना बेटा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है काय के फॉर्म में लिखते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग. ठीक है? क्लियर है? It's a dot, 4 dot of carbon. This is a hydrogen. Here also hydrogen. Dot. ठीक है? Dot. This dot indicate a 4 electron of the carbon. ठीक है? This cross line indicate electron of the hydrogen. So in this way, each carbon has the 4 electron in the form of dot and each hydrogen has the 1 electron in the form of what here? Cross line. It is what here? Electronic formula of what here? Which molecule? The butane molecule. Now how many carbon butane? 1, 2 and this 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. It is the number of carbon. 4 carbon called as the butane. It is a what is zigzag or a bond line formula of butane. This also write in the form of, for understanding आपको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा. ये एक्चुअली जो फार्मूला है zigzag फार्मूला ये होता है, ये लाइन वाला बॉन्ड लाइन, लेकिन समझने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं. ठीक है? ओके, हाउ मेनी कार्बन? 4 कार्बन. 1, 2, 3, 4. फर्स्ट हो 3 हाइड्रोजन. क्लियर बेटा? लास्ट से हो हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन. एंड मिडल हैव द हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2 hydrogen. It is called which formula? It is called as the electronic formula of the what here? Butane molecule. Now we take the last example here, 5th example, pentane molecule. What is the molecular formula of pentane? C5H12. It is a molecular formula of the pentane. Now this molecular formula, how to convert electronic formula? So we take the how many carbon? 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Each have the first what here? First have the 3 hydrogen, remaining middle have the 2 hydrogen. Clear beta? Okay. ठीक है? Now this structural formula, how to convert electronic formula? So bond are right in the form of what here? Electron. Clear? So 4 electron of the carbon. Clear? This is electron of carbon 4. This carbon have the 4 electron. Clear? And the remaining have the how many electron? H? Each have the 1 electron. So
इट्स द स्ट्रक्चर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्लियर। Okay, so in this way we write the what here electronic formula of the pentane molecule. Now it convert to what formula? The zigzag formula. How many carbon? 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. It's also right in the form of what here? Understanding for this opening form of the zigzag formula. So 5 carbon 1 2 3 4 and then 5. First have 3 hydrogen and middle have 2 hydrogen and last also have the how many hydrogen? 3 hydrogen. ये आपको इसको लगाना है बेटा H क्या है तो, ठीक है। So in this way we write the what here, the first member of alkane called as the what here, methane, ethane, propane, pentane. It's a molecular formula. Now this molecular formula, how to convert structure formula? So we write the structure formula in the form of bond here. Next here third, these structure formula are converted into the what formula? Electronic structural formula. Electronic formula. यानी जो बॉन्ड है स्ट्रक्चर फार्मूला में बेटा वो बॉन्ड को क्या में लिखते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज वन बॉन्ड फॉर्म बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन दिस एंड 1 फ्रॉम द हाइड्रोजन. सो इट इज इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ द व्हाट हियर? द मेंबर ऑफ अल्केन. थर्ड, दिस इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला आर कन्वर्टेड टू फार्मूला zigzag line formula or bond line formula. It means the bond, the carbon and hydrogen are represented in form of the what here? Bond. The carbon and hydrogen atom are represented by the what here? The bond called as the zigzag line formula or bond line formula. तो ऐसे लिखते बेटे देखें. मीथेन मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला नहीं आता है, लेकिन जो रिमेनिंग है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन, क्लियर, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन. इस तरीके से 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए बेटा हमने. 5 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करनी है, यही पैटर्न है पूरा आपको. पहले 6 एग्जाम्पल क्या आएगी इसकी? हेक्सेन, ठीक है. हाउ मेनी का मॉलिक्यूलर फार्मूला हेक्सेन व्हाट हियर? C6H14. नाउ स्ट्रक्चर फार्मूला वी ट्राइड द फॉर्म ऑफ दिस हियर, ऐसा लिखना है आपको. और बाद में वो जो स्ट्रक्चर फार्मूला कन्वर्ट करना है आपको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला में कन्वर्ट करना है, ठीक है. इस तरीके से लिखा मैंने. यानी फर्स्ट वाले कार्बन को 3H लगाएगी और लास्ट वाले को 3H लगाएगी. H मीन्स हाइड्रोजन, और रिमेनिंग जो मिडल में उसको 2 हाइड्रोजन लगाना है आपको, ठीक है बेटा. और उसके ये जो क्रॉस लाइन दिख रहा है, ये क्रॉस लाइन काय के इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है. और ये डॉट है काय के इलेक्ट्रॉन है? वो कार्बन की. जैसे बॉन्ड है वैसे आपको उसमें काय को चेंज करना है? इलेक्ट्रॉनिक में चेंज करना है. 1 बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड अगर 1 है इसमें, तो ये बॉन्ड कैसे बने? 2 इलेक्ट्रॉन से बना. 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन एंड 1 फ्रॉम दिस हाइड्रोजन. अभी जो बॉन्ड आया उसको बॉन्ड को चेंज करना इलेक्ट्रॉन में करना है, तो ये कार्बन को डॉट देना है एक इलेक्ट्रॉन को, और एच के इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? सिंबल क्रॉस लाइन का देना है. इस तरीके से आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन दोनों डिकीन तक सॉल्व करना है. 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए, 5 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है ये फॉर्म में. बाद में चेंज क्या में करना है इसको? जिगजैग में, इस तरीके से. अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, 7. इस तरीके से जिगजैग फार्मूला में आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है. सो इन दिस वे वी कन्वर्ट द फर्स्ट molecular formula into structural formula, structural formula into electronic formula, and electronic formula into zigzag line formula और bond line formula. ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके. इस तरीके से आपको एग्जाम्पल नंबर 5 जो सॉल्व करके दी हुई है, 5 इसमें ऐड करना है, एंड हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और डिकेन तक आपको सॉल्व करना है ये पैटर्न, ठीक है. इजी है, ठीक है. कभी कभी आपको नीट में क्वेश्चन आता है इस तरीके से भी आता है आपको, विच इज़ द फार्मूला ऑफ द zigzag फार्मूला और zigzag बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ द प्रोपेन मॉलिक्यूल. तो प्रोपेन मॉलिक्यूल में हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन, प्रोपेन मॉलिक्यूल राइट है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे. देन ब्यूटेन पे ये क्लिक करेंगे समझने के लिए, ठीक है. ओके बेटा, अभी इट्स ऑल अबाउट एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोकार्बन अल्केन. अगर एग्जांपल चेंज किया यहाँ पे, एक आधा कोई फंक्शन ग्रुप दिया, अल्कोहल वगैरह वेज दिया, तो भी आपको समझना ज़रूरी होता है, ठीक है बेटा. इसके बाद एग्जाम्पल जो रहेगी 10 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करिए. 5 तो सॉल्व किया कर दिया मैंने आपको, जैसे 5 आपको ऐड करना है और सॉल्व करना है. रिमेनिंग जो एग्जांपल है, हाउ टू राइट जिगजैग फार्मूला ऑफ द मीथेन, मिथेनॉल, अल्कोहल वगैरह हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच.